We can wait for 10 more seconds and then we can move ahead with the session. Alright, so hello everyone and welcome back to CUET Exam Factor. एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ मिलती है CUET की complete guidance. So at this point, when we all want that we score as good as possible, so Exam Factor has to offer to us their number of products, and it's a very good platform. I would recommend you to join it for a complete and precise preparation. So before moving ahead, let me introduce myself. So my name is Chiranshi and I'm currently pursuing BCom Honours from Hansraj College, University of Delhi. I appeared in CUET 2022, the year it was newly introduced, and I scored 100 percentile in business studies, 99 percentile in accountancy and economics, and 98 percentile in English and mathematics. Here at Exam Factor, I'll be discussing some of the previous asked questions of business studies. Along with that, I'll discuss some underlying concepts and important topics. Not only that, I'll discuss some of my exam experiences, the tips and tricks that I used during my time, some methods and strategies that might be helpful for you to attempt questions accurately as well as within time. So without any further delay, let's see what Exam Factor has to offer to us. So at this point, when we are left with almost 1 month or one to 1.5 months, we need to make sure to focus on two important things, a good revision as well as good practice. So Exam Factor is a one-stop solution for both these. Exam Factor has to offer to us their crash courses. Crash courses are nothing but the one shot lecture series जिसमें आपको पूरे सब्जेक्ट में जितने भी चैप्टर्स हैं हर चैप्टर को वन शॉट लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया जाएगा. Not only the explanation but also the experienced faculty of Exam Factor discusses some of the previous asked questions, some important topics which might be important for you to study to attempt questions accordingly. एंड उसमें पता लग जाता है क्रैश कोर्सेज में कि कौन से टॉपिक्स पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए और कौन से टॉपिक्स हम थोड़ा लाइटली ले सकते हैं बिकॉज एट दिस पॉइंट वी नीड नॉट to study the entire syllabus again and again. It's important to focus on some key areas. It's important to focus on the important topics so that हमें उसका gist मिल जाए कि कहाँ से किस type के questions आ सकते हैं. So it's very important that you should take crash courses. I would recommend you because कम time में हमारा ज़्यादा syllabus cover हो जाएगा and you'll get a good precise revision of all the possible subjects. Exam practice products and crash courses are available in all the possible subjects, right from accountancy, economics, mathematics to physics, chemistry, biology, history, political science, and not only these subjects but also English language and general test. Second thing which I talked about was to practice. A good practice makes your scores. A good practice increases your scores. Because what happens is कि हमने एक बार सिलेबस तो पूरा पढ़ लिया हमने सब कुछ पढ़ लिया लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि किस टॉपिक में से किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे स्पेशली इन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस स्पेशली इन ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम जहाँ पर हमें पता होना बहुत जरूरी है कि हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसमें से किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं अगर हमने फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेशन पढ़ा है बिजनेस स्टडीज में तो उसमें से किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं लाइक असर्शन रीजन मैच द फॉलोइंग्स एमसीक्यूज किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं so it's very important to study and analyze n number of questions from a particular topic so that हमें पता लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस कहाँ से आ सकते हैं. So exam practice mock test series is aligned with the CUET curriculum. जिस तरीके का आपका CUET का एग्जाम आएगा उसी से अलाइन रहता है हमारे एग्जाम फैक्टर मॉक टेस्ट सीरीज. तो उसमें आपको डिफरेंट न्यूमरस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मिल सकते हैं हर टॉपिक से. So it's very important and helpful. Again, it is available in all the possible subjects accountancy, business studies, economics, to mathematics, physics, chemistry, biology, history, geography, political science, psychology, as well as English language and general test. You can use my coupon code, which is CDEF20, for straight 20% discount. So you can check out the Exam Practice official website link in the description below. So let's start with today's questions. Before that, we can wait for 20 more seconds so that
everyone can join. All right. The first question that we have is the match the following question. एक कॉन्सेप्ट दे रखा है, एक साइड पे हमें कॉन्सेप्ट दे रखा है और एक साइड पे उसकी कुछ क्वालिटीज दे रखी है, उसका कॉन्सेप्ट दे रखा है कि वो किस तरीके से उनकी मैच होगा. So this question has appeared in CUET 2023, which is the last attempt. Let's see कि इसका क्या आंसर होना चाहिए. Let's analyze each options one by one. First one is production concept. Production concept focuses on, as we know that in marketing, marketing में हमने कुछ concepts पढ़े थे, right from production concept to product concept, then selling, marketing and societal marketing concept. तो उस concepts में अब अगर हमें पता लग गया है कि ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पिछले अटेम्प्ट में आ चुका है. So it's very important to focus upon this particular topic specifically because हाँ इसके अराउंड कहीं से भी कुछ भी टाइप के क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं. So production concept focuses on the affordability and availability of the products. It mainly focuses on during the industrial time जहाँ पर डिमांड ज्यादा होती थी लेकिन सप्लाई ज्यादा नहीं होती थी प्रोडक्ट्स की. तो what sellers used to do कि वहाँ पर sellers कम होते थे लेकिन बायर्स ज्यादा होते थे, डिमांड ज्यादा होती थी. तो जो कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है वो बायर्स खरीद लेते थे टू फुलफिल देयर स्पेसिफिक डिमांड्स. तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का पूरा पर्पस ही यही है कि फोकसेस ऑन दी अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स कि हम डिमांड जो बायर्स हमें हमसे डिमांड कर रहे हैं उन्हें प्रोडक्ट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं. अलॉन्ग विद दैट अफोर्डेबिलिटी भी हमें फोकस करने की प्राइस रेंज कितना अफोर्डेबल हो सो दैट दे कैन बाय इट एंड अफोर्ड इट. सो लेट्स सी इन सब में से कौन सा ऑप्शन रेलेवेंट होगा एंड एक्यूरेट होगा इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से. Customer needs? No. Existing product and promotion, quantity of product and quality of product. So the correct option for the production concept would be third, which is quantity of product, because it focuses on the availability and affordability of as many products as possible. ये quantity पे focus करता है ना कि किसी और factor. Next concept that we have is product concept. Product concept is the very next step of production concept. अब during the course of time जहाँ पर हमने देखा था कि डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थे, सेलर्स कम थे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली हमारे सेलर्स भी धीरे धीरे मार्केट में इंक्रीज होना स्टार्ट हो गए थे. तो उस पॉइंट पे क्या होता था कि कंपटीशन बढ़ता था. उस पॉइंट पे सेलर्स बहुत सारे होते थे और हर सेलर अपने अपने प्रोडक्ट्स अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी के कॉन्सेप्ट के बेंचमार्क पर रखकर प्रोड्यूस करता है, राइट. तो अब डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या आता है यहाँ पर? क्वालिटी. कि प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में हम अवेलेबल भी करा रहे हैं प्रोडक्ट्स, उसमें क्वांटिटी भी अच्छी खासी है, लेकिन द मेन फोकस इज नाउ इज ऑन दी क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी. तो क्वालिटी पे ज्यादा फोकस किया जाएगा यहाँ पर, प्रोडक्ट के फीचर्स पे ज्यादा फोकस किया जाएगा रादर देन इट्स क्वांटिटी. तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का पूरा पर्पस यही होता है विच इज द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स. सो सेकेंड ऑप्शन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज quality. Third one is marketing concept. Marketing concept is basically it focuses marketing का हमने क्या मतलब पढ़ा था? Marketing का हमने मतलब पढ़ा था it focuses on the customer needs and wants. It focuses on fulfilling their needs and wants. तो marketing concept में हम यही फोकस करते हैं कि जो कस्टमर की नीड्स है, wants है, उन पर हम फोकस कर रहे हैं, उनकी डिमांड्स को फुलफिल कर रहे हैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट aligns with the customer needs. And fourth concept is selling concept. Selling concept comes before marketing concept. Selling concept में क्या होता है? Selling concept में हम क्या करते हैं? हम selling techniques को use करते हैं, हम aggressive selling techniques को implement करते हैं, use करते हैं इस concept में so that हमारा revenue increase हो, हमारे business की growth हो. अब over the period of time क्या हुआ? Start हुआ था for the consumer oriented कि consumers की demand को हम fulfill कर रहे हैं, उस basis पे quantity products produce कर. फिर उसके बाद हम आए क्वालिटी पे कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स देंगे और कस्टमर्स उन्हीं से खरीदेंगे जिनके पास अच्छी क्वालिटी होगी. एब्सोल्युटली. देन कॉन्सेप्ट आता है कि उनकी नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल कर रहे हैं, बट हाउ कैन द ऑर्गेनाइजेशन, हाउ कैन दैट पर्टिकुलर ब्रांड इंक्रीज इट्स सेल्स, इट्स रेवेन्यू. तो उस पर्टिकुलर फेज में आता है सेलिंग कॉन्सेप्ट. सेलिंग कॉन्सेप्ट फोकसेस ऑन यूजिंग सम aggressive selling technique so that वो अपने मार्केट की जो मार्केट में जो उनकी पोजीशन है, ग्रोथ है, उसको इंक्रीज कर सके. तो सेलिंग कॉन्सेप्ट फोकसेस ऑन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड इट्स प्रमोशन, प्रमोशन करके उनका इंक्रीज कर सकते. तो फोर्थ का कॉन्सेप्ट होगा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड प्रमोशन.
So let's compare the options with the correct answer. For 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, and we can see कि एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये ऑप्शन कैरी करे हो। तो मैथ्स ऑफ फॉलोइंग में क्या होता है कि अगर हम पहले कंपेयर कर लेंगे, हम सारे आंसर्स खुद कर लेंगे बिना ऑप्शंस देखे। ऑप्शंस से देखेंगे हम सबसे पहले अपने क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद क्या होगा, हम जब कंपेयर करेंगे उसको ऑप्शंस के साथ, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है। एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन डायरेक्टली फ्रॉम द लास्ट ईयर्स वन ऑफ दी स्लॉट्स। तो उसमें क्या होता है कि ऑप्शन थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, एलिमिनेशन के बहुत चांसेस आ जाते हैं मैथ्स ऑफ फॉलोइंग्स में, क्योंकि अगर हमने पता है कि हमारा आंसर करेक्ट है, एक्यूरेट है, हम एलिमिनेट कर सकते हैं। इस केस में क्या होगा कि हमें पता है कि फर्स्ट का आंसर 3 है एंड सेकंड का आंसर 4 है। तो फर्स्ट का आंसर सिर्फ ऑप्शन बी में है, ना ए में है, ना सी में है, ना डी। तो हम ए सी डी को ऑटोमेटिकली एलिमिनेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दी वन क्वेश्चन इटसेल्फ विच इज 1 का 3। एंड देन बाकी भी हम कंपेयर करेंगे, सेकंड का 4, थर्ड का फर्स्ट एंड फोर्थ का सेकंड। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। In case there are any doubts, you can leave that in the comments below. Alright, let's move ahead to the solution. Solution में क्या है? Production concept. Again, this concept is centered around the idea that consumers prefer products that are widely available and affordable. The main focus is on maximizing the production efficiency. इसमें फोकस क्या होता है? मेन क्वांटिटी इंक्रीज करना, मैक्सिमाइज करना अपनी प्रोडक्शन की एफिशिएंसी एंड लोअरिंग दी कॉस्ट। लोअरिंग कॉस्ट क्यों? क्योंकि अफोर्डेबिलिटी भी हमें मेंटेन करके चलना पड़ता है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का एक बहुत बड़ा टैगलाइन भी यही है कि अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी पे वो फोकस करता है। So the main focus is on maximizing the production efficiency and lowering cost. Therefore, the key here is quantity of मैक्सिमाइज प्रोडक्ट्स करते हैं हम, इस वजह से हमारा जो की एरिया है यहाँ पर दैट इज ऑन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, emphasizing the emphasis on producing large quantities to meet demand and keep prices low. Emphasizing the emphasis on producing large quantities, ज्यादा क्वांटिटीज में प्रोड्यूस करना जिससे हमारे डिमांड्स फुलफिल कर सके हम कंज्यूमर्स के, कंज्यूमर्स हमसे ही खरीदे। तो वहां पर तो कोई सेलिंग टेक्निक्स यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बिकॉज उसमें लिमिटेड सेलर्स होते थे, लिमिटेड सप्लायर्स होते थे सिर्फ। तो उस टाइम पे सेलिंग टेक्निक्स या फिर क्वालिटी पे फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बिकॉज अल्टीमेटली बायर्स वुड परचेज इट, बायर्स वुड बाय इट अल्टीमेटली, उसमें कोई अदर ऑप्शन नहीं है उनके पास। Moving on to the next concept, which is product concept. The product concept focuses on the quality and features of the product itself. Quality and features पे focus किया जाता है। It emphasizes that consumers will favor products that offer the most in terms of quality, performance and innovative features. उनका emphasis क्या होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो क्वालिटेटिव होना चाहिए, उसमें क्वालिटीज होनी चाहिए, उसमें फीचर्स होने चाहिए, उसमें कुछ यूनिक डिफरेंशिएशन आइडेंटिटीज होनी चाहिए। तो उस पर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट फोकस। Therefore, the focus of this concept is quality and features of products, highlighting the importance of product attributes in the eyes of consumers. Alright, next concept is marketing concept. This concept revolves around understanding and meeting the needs and wants of customers. The central idea is that businesses achieve their goals by identifying and satisfying the needs of their target markets more effectively than their competitors. मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि वो अपने जो कस्टमर्स हैं उनकी नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उससे अपने गोल्स सेट कर लेते हैं एंड देन उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं टारगेट मार्केट्स में एंटर होके more effectively than their competitors. मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का पर्पस ये है कि आप किस तरीके से कितने इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो कस्टमर्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के, उनकी किस तरीके से आप नीड्स फुलफिल करते हैं। अगर आप इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली करते हैं देन योर कंपेटिटर्स, तो इट्स अ प्लस पॉइंट। Therefore, the key word for this concept is customer needs, highlighting the significance of customer-centric strategies in the marketing. अब यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने की एरियाज देखे, हमने की पॉइंट्स भी देखे हैं यहाँ पर, राइट। तो उस बेसिस पे हमारे पास आंसर आता है कस्टमर नीड्स। Selling concept. Selling concept holds that customers and businesses, if left alone, will ordinarily not buy enough of the organization products. अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर कस्टमर्स को बोल दे, अब जैसे ये केस जो अगर हम प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में लेते हैं, प्रोडक्शन में तो ये केस था ही कि अगर कंज्यूमर्स और बिजनेसेस को रख दे बिना किसी एफर्ट लगाए तब भी उनका बिजनेस चलेगा, बिकॉज डिमांड है और सप्लाई कम है तो वो खरीदेंगे ही खरीदेंगे।
सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या है कि अगर बिजनेस को और कस्टमर्स को बिना कोई एफर्ट लगाए, बिना कोई मार्केटिंग प्रमोशन या कैंपेन्स करके इसका छोड़ दिया, तो कोई चांस नहीं है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर आपकी ब्रांड को कोई खरीदे या फिर आपके प्रोडक्ट्स को कोई कस्टमर्स खरीदे. So it's very important to put that marketing element in the organization in that particular brand so that customers को हम attract कर सकें. So that is what selling concept tells. It holds that customers and businesses, if left alone, will ordinarily not buy enough of the organization's products. As a result, businesses must undertake aggressive selling and promotion efforts. The main concept for this concept is existing product and promotion, emphasizing the need to push the product on to consumer through sales and promotional strategies. Hence, the option number B is correct. Moving on to the next question. The question says, identify the following under whose overall administrative control SEBI functions. SEBI किसके अंडर काम करता है? Options are Ministry of Corporate Affairs, Ministry of Home Affairs, Ministry of Finance, Ministry of External Affairs. इनमें से सेबी किसके अंडर काम करता है? ये जीओआई का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है हमारी, उसके अंडर कुछ मिनिस्ट्रीज अलग अलग सेक्टर्स के लिए बनी हुई है, अलग अलग डोमेन्स के लिए बनी हुई है. तो ये उन्हीं की बात कर रहे हैं. तो सेबी किस मिनिस्ट्री के अंडर परफॉर्म करना चाहिए? I'll give you 10 seconds. In case you know any answer, then you can leave in the live chat below. All right. इसका क्या करेक्ट आंसर लीजिए? थोड़ा लॉजिकल बेस्ड भी एंड ऑल्सो आई एम मेंशनिंग दिस दैट दिस क्वेश्चन हैज कम इन द प्रीवियस अटेम्प्ट. तो इस केस में क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, होम अफेयर्स, फाइनेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स. सबसे एक्यूरेट कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, व्हिच इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी. SEBI is an autonomous organization that works under the administration of Union Finance Ministry, Ministry of Finance, Government of India. The Security and Exchange Board of India is managed by the following members. The chairman was nominated by the Union Government of India. Two members, that is officers and Union Finance Ministry. One member from the Reserve Bank of India. The remaining five members are nominated by the Union Government of India. Three of the five members should be full-time members. Alright, so the correct answer for this is Ministry of Finance. That Ministry of Finance is the has the administrative control over SEBI's functioning. Moving on to the next question. Again, this question is of match the following and it's an important one. I must say, हम ये जो question आया है ये हमारा आया है Consumer Protection Act से. And often क्या होता है कि हम Consumer Protection Act को बहुत lightly ले जाते हैं. राइट. तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को ध्यान देना बहुत जरूरी है. उसके क्वेश्चंस इस तरीके से आ सकते हैं. कुछ कुछ एलिमेंट्स होते हैं उसमें, जैसे कि राइट्स, जो हमारे 6 राइट्स हैं. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की लीगल डेफिनेशन वो डायरेक्टली भी पूछी जा सकती है आपसे. अदर देन दैट, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ गुड बायर, अ रैशनल बायर. अदर देन दैट, जो हमारे 3 कमीशन थे, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल कमीशन एंड सुप्रीम कोर्ट, या फिर स्टेट कमीशन भी था बीच में, उसके जो कंसिडरेशंस ऑफ अमाउंट्स है कि वो कौन से अमाउंट को कंसिडर करता है, जैसे कि अप टू 1 लाख, अप टू 10 लाख, अप टू 1 करोड़, अप टू 10 करोड़. तो वो सारा जो फिगर्स है वो भी आपको याद होना चाहिए. वो भी मैच द फॉलोइंग से आ सकते हैं. Moving on to this question, I'll give you 10 seconds to answer in case there are any questions. या फिर in case you know the answer of this question, you can let me know in the live chat below, and then we'll move ahead to the solution. All right. Let's compare column number 1 with column number 2. फर्स्ट कॉलम में हमारा आता है आईएसआई मार्क. हमने आईएसआई में क्या कैसे देखा है? हमने आईएसआई में हमने ये देखा होगा कई सारे प्रोडक्ट्स में किस तरीके का हमने मार्क देखा होगा हमारे बहुत प्रोडक्ट्स में. दिस इज आईएसआई मार्क. इसकी आपको फुल फॉर्म भी नेक्स्ट उसमें मिलेगी. एक ट्रेडिशनल फुल फॉर्म भी थी और एक चेंज हो गई है. आईएसआई मार्क, अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है, देन आईएसआई मार्क जो होता है वो हमारे वो वहां पर होता है इलेक्ट्रिकल गुड्स पर प्रेजेंट. ऑलराइट, जो आईएसआई मार्क होता है वो इलेक्ट्रिकल गुड्स पे
प्रेजेंट होता है, जो कि उनकी सिक्योरिटी, उनकी ऑथेंटिसिटी वो बताता है। एफपीओ मार्क की फुल फॉर्म होती है फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर। तो ये एक मार्क है, एज द नेम सजेस्ट फूड प्रोडक्ट्स, मतलब ये फूड प्रोडक्ट्स पे रहता है। हॉलमार्क जो हमने एफएसएसआई मार्क्स भी देखे हैं कई बार हमारे फूड प्रोडक्ट्स पे, तो उस केस में क्या होता है कि उस केस में एफपीओ मार्क ही होता है, वो जो उसमें मार्क्स जो डिफाइन होते हैं कई कई अथॉरिटीज के बीच में, तो वो एफपीओ मार्क होता है, जो कि दिखाता है कि फूड प्रोडक्ट में उसमें कोई केमिकल्स तो नहीं है, कुछ एडिशनल वो तो नहीं है, हार्मफुल सब्सटेंसेस वो सेफ है खाने के लिए या नहीं। तो उस केसेस में एफपीओ मार्क प्रेजेंट होता है टू इंडिकेट दैट दिस प्रोडक्ट इज सेफ टू कंज्यूम। हॉलमार्क होता है ज्वेलरीज, मेटल्स, ज्वेलरीज, गोल्ड, प्लैटिनम, इन सब। एग मार्क होता है, एग मार्क की फुल फॉर्म होती है एग्रीकल्चरल मार्क, एग्रीकल्चर से लिया गया है एग। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे, मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स पे, एडिबल ऑयल, घी, डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, उन पे एग मार्क होता है। दैट इज सेकेंड ऑप्शन। नाउ लेट्स कंपेयर द ऑप्शंस विद द करेक्ट आंसर। आईएसआई मार्क 4, 1, 4। अब हम देख सकते हैं कि सिर्फ बी और सी ही ऐसे ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट का फोर्थ आंसर है, बाकी सब हम एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट। देन कम्स एफपीओ मार्क विच इज थर्ड, सेकेंड का थर्ड, एब्सोल्युटली राइट। अब थर्ड का आंसर क्या है, हॉलमार्क का 1, 3, 1, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। लेट्स सी इट्स explanation. The matches of column A with column B are as follows. ISI mark. ISI stands for Indian Standards Institution. ISI का क्या मतलब होता है, इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन, जो कि स्टैंडर्डाइज्ड बताता है कि इलेक्ट्रिकल गुड्स जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं वो सेफ टू यूज है या नहीं है, विच इज नाउ नोन एज द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, BIS हो गया। The ISI mark is a certification mark for industrial products in India. It certifies that a product conforms to the Indian standards set by BIS. FPO mark. FPO stands for Food Products Order. Food product certification is required for food products in India to ensure that they meet the standards set by the government. The FPO mark ensures that the food products are safe for consumption and comply with the regulations set by Food Safety and Standards Authority of India. FSAI की भी हमें definition आनी चाहिए, Food Safety and Standards Authority of India. Moving on to third mark, which is hallmark. A hallmark is a purity certification or a guarantee of the purity or fineness of precious metals like gold and silver. ये गारंटी बताता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हमारा ज्वेलरी पीस है, वो प्योर है, ऑथेंटिक है, सेफ, राइट, उनकी फाइननेस बताता है। अब कई बार क्या होता है कि मार्केट में हमारे ऐसी आर्टिफिशियल ज्वेलरी गोल्ड के नाम पे बेची जाती है कि उसमें कुछ फिनिशिंग लगा दी, बस एक पतली सी लेयर लगा दी है गोल्ड की, एक सिंगल लेयर है, प्लेटिंग है उसकी गोल्ड की, लेकिन वो ओरिजिनल गोल्ड नहीं। तो ओरिजिनल गोल्ड कैसे पता लगता है, उस पे हॉलमार्क। All right. It is used primarily in the context of jewelry, indicating the purity of the metal or in the piece. All right. Indicate करता है कि वो metal है जो pure है। Egg mark. Egg mark is a certification mark employed on agricultural products in India, ensuring that they conform to a set of standards provided by the Agricultural Produce Grading and Marking Act of 1937. ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। It is mainly used for agricultural products such as edible oils, grains, and other agricultural products. So the correct answer is option number C, which was the first ka fourth ISI mark on electrical goods, FQ marks in food products, hallmark in jewelry products, egg mark in ghee and edible oil. Moving on to the next question. In case there are any doubts, do let me know in the live chat below. Then we'll move ahead to the next question. All right. A company plans to replace an existing machine with a new machine. Existing machine को replace करना चाहते हैं एक new machine के साथ, तो ये कौन सा decision होगा? Funds management decision, dividend decision, working capital decision या capital budgeting decision?
So this decision aligns with the investment decision, जो कि हमारा बड़ा अमाउंट का डिसीजन होता है. तीन टाइप्स ऑफ डिसीजन वी हैव स्टडीड इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट. एक तो फाइनेंशियल डिसीजन, एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड एक डिविडेंड डिसीजन. फाइनेंशियल डिसीजन में हम इक्विटी और डेट के बारे में पढ़ते हैं कि सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या है हमारे, हम सोर्सेज कहाँ से लाएंगे. एक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में हम पढ़ते हैं कि हम एवेन्यूज कहाँ का अलोकेट कर सकते हैं अपना पैसा, विच इज ईदर इन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज या फिर इन शॉर्ट टर्म. देन डिविडेंड में या तो हम रिटेन करेंगे जो हमारा प्रॉफिट्स है या फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एज डिविडेंड्स. ऑलराइट. सो अ कंपनी प्लान्स टू रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग मशीन विद अ न्यू मशीन. तो रिप्लेसमेंट इसमें डिसीजन लिया जाना है. सो दैट इज द करेक्ट आंसर इज कैपिटल बजटिंग डिसीजन. कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्यों है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पार्ट है कि हमारा जो पैसा है वो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे. हम एग्जिस्टिंग जो हमारी मशीन है उसको रिप्लेस कर देंगे, एक नई मशीन ले आएंगे, और इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट का बेसिकली मतलब होता है कि जो हमारा पैसा है वो अलोकेट कर दिया, वो निवेश कर दिया, वो वहां पर हमने स्टॉक अप कर दिया, क्या वो हमारा पैसा वहां ब्लॉक हो चुका है फॉर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. अब वो भी डिपेंड करता है कि एक साल के लिए कर रहे हैं या फिर एक साल से ज्यादा के लिए हमारा पैसा ब्लॉक हो रहा है उस पर्टिकुलर एसेट में. तो अगर वो एक साल तक के लिए कर रहे हैं दैट वुड बी नोन एज वर्किंग कैपिटल डिसीजन, विच वुड बी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन. अगर वो पैसा एक साल से ज्यादा पीरियड के लिए स्टोर हो रहा है या फिर ब्लॉक हो रहा है तो उस केस में उसको कहते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन, विच इज द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन. ऑल राइट. सो इस केस में हमारा बड़ा अमाउंट था, मोर देन 1 ईयर के लिए किया जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल आई एम परचेजिंग अ प्लांट या फिर आई एम परचेजिंग एन इक्विपमेंट फॉर माई फैक्ट्री. तो वो एक साल के लिए तो नहीं खरीदूंगी, हर साल अपनी मशीनरी या फिर फॉर सपोज साइबर कैफे में खरीदूंगी. इट वुड बी इजी टू अंडरस्टैंड इन दिस केस. जो मैं साइबर कैफे में प्रिंटिंग मशीन होती है, फोटो कॉपिंग मशीन होती है, जेरोक्स मशीन होती है, वो मशीन हम हर साल तो नहीं खरीदते या फिर हर महीने तो नहीं खरीदते, वो हम एक बार खरीदते हैं वो 5-10 साल चलता है उस मशीन के लिए. तो दैट इज अ बिगर इन्वेस्टमेंट. सो दैट वुड बी नोन एज कैपिटल बजटिंग डिसीजन. तो फंड्स मैनेजमेंट डिसीजन क्या होता है, फंड्स मैनेज करना, फंड्स को किस तरीके से हम मैनेज कर रहे हैं उसे उसका डिसीजन लेना, बट दैट इज नॉट actually relevant here. Dividend decision is talking about the how profits are allocated in retained earnings and dividend. Working capital decision talks about the short-term investment decision, and lastly, capital budgeting decision talks about the long-term investment decision. Any doubts? Do let me know. The decision to replace an existing machine with a new one typically falls under the category of capital budgeting decision. Capital budgeting involves analyzing and evaluating potential long-term investments or expenditures. कि जो हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है या फिर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे, एक्सपेंस को इनकर करेंगे टू डिटरमाइन देयर वायबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, उससे रिटर्न लेने के लिए. तो दैट वुड इंक्लूड इन कैपिटल बजटिंग डिसीजन. In this case, replacing the existing machine with a new one would involve evaluating the cost of the new machine, its expected returns, and comparing it with the benefits of continuing to use the existing machine. So this was all about the capital budgeting decision. Moving on to the next question. Choose the correct meaning of saviet enter. There are two terms. एक तो saviet enter होता है और एक saviet venditor होता है. There is a difference between these two terms. Yeah, there are two terms. Venditor. Venditor किस टर्म से बन के मिला है? वेंडर. वेंडर पता लग रहा है हमें. वेंडर का क्या मतलब होता है? सेलर. क्या होता है? सेलर. तो सेलर का ऑपोजिट क्या होता है? बायर. तो ये बायर होगा, राइट. तो इससे हमें पता लग गया कि सेवियट बायर होगा, यहाँ सेवियट वेंडिटर होगा. इट इज अ लैटिन टर्म्स. सो लेट द सेलर बी अवेयर, लेट द इंटरमीडिएट बी अवेयर, लेट द बायर बी अवेयर या फिर लेट द एक्सप्लॉइटर बी अवेयर. यहाँ बी अवेयर की बात हो रही है कि किसको किस पे ध्यान देना चाहिए. तो सेवियट वेंडिटर में लेट द सेलर बी अवेयर होता है, एंड सेवियट एंटर में लेट द बायर बी अवेयर होता है. So the correct answer is option number C, which is let the buyer be aware.
Moving on to its solution, its explanation. The correct meaning of savior tempted is let the buyer be aware. It is a principle in commerce that means that the buyer alone is responsible for checking the quality and suitability of goods before a purchase is made. This places the onus on the buyer to perform due diligence before making a purchase rather than on the seller or individual. So the correct answer is option number C. इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो कॉन्सेप्ट होता है सेवियट एंटर का, इसका मतलब होता है कि जो बायर है दैट ही इज solely responsible for checking the quality and suitability of goods before purchasing the product. Already इसमें seller की कोई responsibility नहीं हो. Next question is, which of the following not the technique of scientific management? What are the techniques of scientific management? हमें ये पता होना चाहिए, फिर उस बेसिस पे हमें इसका आंसर देना है. Which is not the technique of scientific management. I'll wait for 10 seconds in case anyone knows the answer. If anyone is willing to reply, then we'll discuss that particular question. Alright. So, which of the following not the technique of scientific management? हमने 7 techniques of scientific management पढ़ी थी. तो functional foremanship, फिर हमने उसमें कुछ work studies पढ़ी थी, उसमें हमने standardization and simplification पढ़ा था, differential piece based system पढ़ा था और कुछ और भी पढ़े थे. Right? So, which is not the technique of scientific management? Functional foremanship. ये तो होता है टेक्निक. इस टेक्निक का क्या मतलब होता है कि इसमें हमारा जो डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन है वो डिवाइड हो जाता है कि जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा डिपार्टमेंट है, दैट इज डिवाइडेड इनटू टू डिविजन, एक प्रोडक्शन और एक दूसरा वाला जो डिपार्टमेंट होता है. उसमें क्या होता है कि उसमें भी फर्दर फिर डिवाइड होते हैं चार चार, तो 8 तरीके के उसमें क्लर्क्स या फिर उसमें सबऑर्डिनेट्स होते हैं, तो वो फंक्शनल फोरमैनशिप होता है. मेथड स्टडी टॉक्स अबाउट डिसाइडिंग दी वन बेस्ट मेथड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब. एक बेस्ट मेथड चूज करना, उसे काम करना. मोशन स्टडी फोकसेस ऑन trying to focus on study on removing the unnecessary movements that happens in the organization. सारे जो भी unnecessary movements होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में उनको रिमूव करने का काम करते हैं मोशन स्टडी. एंड मेथड स्टडी फोकस करते हैं कि एक बेस्ट मेथड हमें मिल जाए. इन्वेंट्री एनालिसिस, स्टॉक एनालिसिस करते हैं, ये हमने नहीं पढ़ा था टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट. The correct answer would be option number D, which is inventory management. Yes, inventory management. All right. So moving ahead to its explanation, among the techniques listed, inventory analysis is not considered a technique of scientific management. Scientific management, as developed by Frederick Winslow Taylor, primarily focuses on improving efficiency and productivity through the scientific analysis of work processes and the management of labor. The techniques associated with scientific management include time and motion studies. We have studied about the work studies, standardization of work, which is simplification of work को सारा standardize करना, and the use of incentive systems to motivate workers, which is differential piece based system. कि जितना ज़्यादा आप काम करोगे उतना ज़्यादा आपको pay मिलेगा, which is performance based. While inventory management might be a crucial aspect of overall management practice, but it is not directly related to specific techniques of scientific management. Why we have take the option number D, which is inventory analysis, because हमने directly ये scientific management की techniques में नहीं पढ़ा, but overall it impacts the performance of the management, it impacts the management practices. तो इस वजह से inventory analysis इसलिए हमारा scientific technique में नहीं है. So the correct option is D. Tanisha, who recently completed LLB from law faculty, yes, this question, इसका जो फीचर है इट वुड बी प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड नॉट रिस्ट्रिक्टेड एंट्री. उसमें एनसीईआरटी में भी हमें दिया हुआ है जो स्टेटमेंट है इस तरीके का कि आपको एक यू हैव टू बिकम द मेंबर ऑफ बार काउंसिल. तो इसका करेक्ट आंसर प्रोफेशनल एसोसिएशन है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है. ऑलराइट. रिस्ट्रिक्टेड एंट्री इज बेसिकली कि वो हम रिस्ट्रिक्ट कर रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होने की, बट इस केस में वो रिस्ट्रिक्शन वाली चीज नहीं थी, बट यहाँ पे प्रोफेशन के बारे में बात की जा रही थी, यहाँ पर एक अथॉरिटी के बारे में बात की जा रही थी. एक इंस्टीट्यूशन है जो रेगुलेट करता है, तो उसमें प्रोफेशनल एसोसिएशन के बारे में होगा. द करेक्ट आंसर वुड बी प्रोफेशनल एसोसिएशन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट वन. Identify the point which is not an importance of financial planning.
फाइनेंशियल प्लानिंग की कुछ हमने इंपॉर्टेंसेस पढ़े थे, कुछ फीचर्स पढ़े थे, कौन सा नहीं है उसका इंपॉर्टेंस वो हमें बताना। I'll give you 10 seconds. In case you know the answer, do let me know. Then we'll move ahead to the solution. Yes, that was the wrong answer. The correct answer is professional association. I'll bring up such more questions जिसमें मैं restricted entity और professional association दोनों की बात करूंगी in the upcoming lectures. Then your doubt will be clear. ऑल राइट, इसमें इंपॉर्टेंस की बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की। इसमें क्या बात की जा रही है, फाइनेंशियल प्लानिंग हमारा क्या होता है पहले तो ये समझते हैं। प्लानिंग हमने पढ़ा था, इट इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, किस तरीके से पूरा फ्रेमवर्क रहेगा उसको एडवांस में बनाना। अब फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है कि अपने फाइनेंसेस का प्लान करना। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में हमने पढ़ा था, इट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंसेस फॉर द फ्यूचर। हम एडवांस में डिसाइड कर लेते हैं कि कहाँ पर हमें एक्सपेंस करना चाहिए, कहाँ से इनकम आएगी, कहाँ से एस्टिमेटेड हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, वो सब हम फाइनेंशियल प्लानिंग में करते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड ईच ऑप्शन वन बाय वन कि कौन सा इंपॉर्टेंस है और कौन सा इंपॉर्टेंस नहीं है। ऑल राइट, लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन, tries to link the present with the future, avoids business shocks and surprises, and it calculates mix between owners and borrowed funds. Option D, all of them is not there. All the options are there, not the all of them. So any one of them will be correct. Let's see इसका करेक्ट आंसर क्या है, फिर हमारा जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, अवॉइड्स बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। नाउ लेट मी एक्सप्लेन व्हाई। लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन, हमने इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन में डायरेक्ट लिंक हमने पढ़ा था फाइनेंशियल प्लानिंग में, कि प्लान अगर हम करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि कहाँ से सोर्सेज ऑफ फंड्स लाएंगे, मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहाँ से होंगे, कहाँ से इन्वेस्ट करेंगे, जो पैसा हमारा आएगा वो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, तो वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन हुआ। तो यहाँ पर एक लिंक क्रिएट हो रहा है कि फॉर सपोज एक्स अमाउंट आएगा तो हम उसको एक्स अमाउंट को किस एवेन्यूज में डिपॉजिट करेंगे, कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, तो वो लिंक क्रिएट। तो मतलब ये तो हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग है एंड नॉट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ट्राइज टू लिंक द प्रेजेंट विद द फ्यूचर, अब ये तो प्लानिंग का ही फंक्शन है, ये तो फाइनेंशियल प्लानिंग एज अ होल भी नहीं, ये तो प्लानिंग का ही फंक्शन है कि ट्राइज टू लिंक द प्रेजेंट विद द फ्यूचर, कि हम प्रेजेंट में एडवांस में क्रिएट करते हैं फ्रेमवर्क्स इम्प्लीकेशंस एंड फ्यूचर में जो काम आ सके। तो इट ट्राइज टू लिंक द प्रेजेंट विद द फ्यूचर। एंड ऑप्शन नंबर डी, कैलकुलेट्स मिक्स बिटवीन द ओनर्स एंड बोरोड फंड्स। अब इसमें भी स्पेसिफिकली स्पेसिफाई कर दिया हमें कि ओनर्स मतलब इक्विटी और बोरोड फंड्स डेट, मतलब फाइनेंसिंग डिसीजन बहुत अच्छे तरीके से लिया जाता है। व्हाट आई मेंशन कि फाइनेंशियल प्लानिंग एक तरीके का ब्लूप्रिंट होता है जो हमें बता देता है कि हमें कितना परसेंट इक्विटी लेना चाहिए, कितना परसेंट डेट लेना चाहिए। वी हैव रेड कि every organization must take their financial decisions on the basis of their financial statements, their financial position and performance which is happening in the organization. फिर उस बेसिस पे उन्हें डिसीजन लेने चाहिए। तो इट कैलकुलेट्स द मिक्स बिटवीन कि कितना हमें इक्विटी लेना चाहिए, कितना परसेंट इक्विटी इस साल करना चाहिए और कितना परसेंट डेट करना चाहिए। तो वो भी फाइनेंशियल प्लानिंग में ऑलरेडी हम डिसाइड कर। नाउ सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर क्यों है, अवॉइड्स बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। अब प्लानिंग के टाइम पे हमने लिमिटेशंस पढ़े थे प्लानिंग के, दैट प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस एंड प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। अवॉइड्स मतलब शॉक्स, सरप्राइजेस, अनसर्टेनिटीज, रिस्क, ये सारे क्या है, ये सारी अनसर्टेनिटीज है, ये सारे अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस, राइट। इनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते पहले से, इनको हम प्लान नहीं कर सकते स्पेसिफिकली, राइट। तो प्लानिंग का जो इंपॉर्टेंस है दैट नॉट फोकसेस ऑन द अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। वो अपना काम करता है, वो अपना फ्रेमवर्क बनाता है, लेकिन अनसर्टेनिटीज को वो अवॉइड करने में कई बार लॉस कर देता है, वो लिमिट कर देता है अपने आप को। So that's why the correct answer for this question is avoids business shocks and risk surprises, कि वो डायनेमिक इतना नहीं होता प्लानिंग, वो कई बार गारंटी सक्सेस नहीं करता, इस वजह से हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग का इंपॉर्टेंस ये नहीं है। Let's see the explanation. The point that is not important about financial planning is to avoid business shocks and surprises.
Financial planning primarily focuses on creating a comprehensive study for managing finances, including budgeting and investing and controlling costs. While it aims to minimize risks and uncertainties, the specific goal of avoiding business shocks and surprises is not a central aspect of financial planning. Financial planning is more about creating a roadmap. हम specifically उस पे focus नहीं करते financial planning में कि हम avoid करेंगे risk. It focuses on creating a roadmap for achieving financial goals and ensuring the efficient use of resources to maximize its wealth. All right. I'll just check. Give me one day. I'll check it in the NCRT because this question has been taken from the last year. So we have not made these questions. It was directly taken from the last year's slots. So I'll check it once and I'll resolve your doubt tomorrow in the tomorrow's class. Don't worry about that. There might be some error. ऐसा हो सकता है. So don't worry about that. You stick to your concepts and I'll look upon that concept and I'll look upon the NCRT as well. Then हम एक बार ये question कल भी वापस discuss करेंगे. All right. Moving on to next question. CB stands for. अब ये तो काफी simple question हो सकता है. Do let me know the answer of this question. All right. SEBI stands for. What is the full form of SEBI? Also, one more thing can come in terms of SEBI's functioning is when it was executed and launched. So the year it was executed and started implications in the financial market of India was in 1992. So the correct answer for SEBI is that full form of SEBI is Securities and Exchange Board of India. So this is a very factual question and you must know the definition of this particular abbreviation, Securities and Exchange Board of India. SEBI is the regulatory body for the securities market in India. It was established in 1988 and given statutory powers on April 12, 1992 through the SEBI Act 1992. It monitors and regulates the securities market, aiming to protect the interest of investors and promote the development of and regulation of the securities market. Hence, the correct answer is Securities and Exchange Board of India. Absolutely. Option number D is not the right answer. Option number C is correct. स्टॉक मार्केट ये हमें कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके के ऑप्शंस दिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन कि थोड़े पास पास के ऑप्शंस दिए बट हमें बहुत अच्छे से क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है स्टॉक एंड एक्सचेंज बोर्ड नहीं सो मेक श्योर. All right, moving on to the next question. Which of the following objectives of management, यहाँ objective की बात की गई है, major focus यहाँ पर objective पे किया गया है, is the one in which reservations made in the hiring process of any organization for the welfare of disadvantaged sections of the society are an example. कौन सा objective यहाँ fulfill हो रहा है? Do let me know what should be the answer to this question according to you. यहाँ कौन सा objective fulfill किया जा रहा है? हमने मैनेजमेंट में 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे सोशल पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल सोशल ऑब्जेक्टिव्स पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में हमने अब क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था प्रॉफिट्स सर्वाइवल एंड ग्रोथ हमने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा था कि पर्सनली जो इंडिविजुअल्स की एक्सपेक्टेशंस होती है जो हमारे इंडिविजुअल गोल्स होते हैं हमारे जो ह्यूमन वर्कफोर्स होता है ऑर्गेनाइजेशन में उनके गोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस को अगर हम फुलफिल कर रहे हैं तो हमने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट अचीव किया whereas in the social objective उसमें हम सोशल काम करते हैं सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं उसके बेसिस पे हम काम करते हैं. So the correct answer for this particular question would be social objectives. Why so? Because यहाँ पर welfare of disadvantaged sections of societies की बात की जाए. The correct answer would be social objective, not personal objective. Personal objective focus करता है कि जो हमारे human workforce organization में काम कर रहा है उसके लिए हम क्या contribute कर रहे हैं तब हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव आएगा
लेकिन यहाँ पर हम एज अ होल सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, जो वेलफेयर ऑफ डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है उसके लिए काम कर रहे हैं, तो इसमें सोशल ऑब्जेक्टिव्स आएगा, ना कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. Organizations are a part of society and they have some obligations towards it. The social objectives of management are focused on fulfilling the social obligations of any organization, making special changes in the hiring process to benefit the disadvantaged sections of society is an example of contribution made to the welfare of society, not the human workforce to be specific. On the other hand, the personal objectives of the firm are associated with the welfare and satisfaction of human work. This is the clarity of your doubt that occurred between personal and social objectives. कि जो personal objectives होते हैं that focuses that are associated with the welfare of their human workforce, ना कि society. और social objective it is focusing on the welfare of disadvantaged sections of the society या फिर welfare of the society as a whole. The organizational and profit objectives are related to promoting economic viability. वो economic की related होते हैं, वो monetary related होते हैं. तो इसलिए option number A is the correct answer for this particular question. So that was all for today. These were the questions that we had to discuss today. I'll bring up some more questions tomorrow as well as in the upcoming lectures. Till then, you can also look upon the previous live lectures that we have done. We have discussed some more important questions in the previous lectures. Also, we have discussed the management important topics in one video, as well as the different other topics as well. Till then, you can watch them. You can also consider subscribing to the channel and you can visit the official website of ExamFactor in case you are interested in taking up the mock test series and crash courses or any other products of ExamFactor. Alright, so you can use my coupon code which is CDEF20 for straight 20% discount. Until then, keep learning and all the best.